कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. In November 2020, one person, Shri Sai Arvind, for a very small loan of rupees 3,000, he committed suicide, sir. He committed suicide because most of this app requires users to grant them access to text, to images and contacts as well as camera. And then these apps, they copy the contact list and photos and use them to harass the victim, sir. Thus, sir, I appeal to the finance minister. I appeal to the finance minister to take stringent action against these apps and to make sure to direct the RBI to give the proper guidelines so that such apps can be controlled. Thank you very much, sir. Maननीय Finance Minister. Sir, this issue that the honorable member has raised about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honorable member has raised. I'd like to inform through you, the August House, that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. सर, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. Thank you. Thank you. एक मिनट एक प्रमोद प्रजापति, आप माननीय अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन प्लीज, आप प्लीज राघव जी प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे, मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीट लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया। पुनः रूल 267 के अंदर जितने नोटिस आए थे, इंक्लूडिंग माननीय राघव चड्ढा जी आपका, उस स्थिति मैंने स्पष्ट की। हाउस जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। अगर लिस्टेड बिजनेस में कोई चीज बदलाव होती है तो चेयरमैन के कॉन्सेंट से स्पष्ट किया मैं 267 के तहत क्या स्थिति है। आप में से कोई सदस्य किसी वक्त अगर कुछ कहना चाहे तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं उसके तहत मैं फंक्शन करता हूं। आपने रूल्स जो बनाए हैं, जो डेली का बिजनेस है उसके तहत मैं चलूंगा। अगर 0 आवर चल रहा हर आदमी खड़े हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। माननीय